Hello everyone. Now we'll be running through some key concepts from the chapter Chemical Bonding. These concepts will be quite useful in tackling the problems which will be discussed at the end of the chapter. So now let's start with the theory part. Hello everyone, I am Devansh and we are going to study chemical bonding. It is one of the most important topic in the whole chemistry, and in every exam it has a lot of weightage. So let us start with the theory part. In this, the first image you can see is the images of orbitals. As you can see, this is an s orbital. It is spherical in shape. Then we have px orbital. But first of all, आपको ये सब समझाने के पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक ऑर्बिटल होता क्या है. Okay. सबसे बेसिक कंसेप्ट कि व्हाट इज एन ऑर्बिटल. आपने पढ़ा होगा कि एक बोहर एटम होता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन घूमता है. बिल्कुल राइट. और ऑर्बिटल का ऐसा है कि ऑर्बिटल वो एरिया है जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन मिल सकता है. Okay. बेसिकली द होल ऑर्बिटल इज द स्पेस वेयर यू कैन फाइंड एन इलेक्ट्रॉन. So we can say the space where the probability of finding the electron is maximum. हाँ. Okay, ठीक So है. this is what an orbital is. Okay. So जब हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इज 1s, so 1s is like this. Let us consider it as 1s. 1s is spherical, and as you can see, there is x-axis, y-axis, and z-axis. Okay. And it is in the center, like a spear. Now the second one, px orbital. It is a dumbbell shape orbital, and as you can see, the subscript is x. Okay. So the whole orbital lies in the x line. Okay, along the x-axis. Okay. Similarly, the py. Okay, that lie along the y-axis. It lie along the y-axis, and similar is the case with pz. It lie along the z-axis. Now, let us go with dxz. dxz, as you might study in coordinate geometry, xy or xz. Here xz, this is the x-axis, this is z-axis. So in xz, the electron density is between the two axes. Here you can see the positive x and the positive z. Okay. And here it's completely opposite, like minus x minus z. Okay. So it's between the four or octants, four quadrants of the. So basically it lies in the xz plane. Okay. That's it. Similar is the case with yz, and similar is the case with xy. Okay. And now comes the dz square. In dz square, you can see the orbitals lie along the z-axis, and there is a ring surrounding to it. This ring. Okay. And the ring is around the xy plane. Okay. It lies in the xy plane. Okay, and the lobe is along the z-axis. Yeah. Okay. And then finally we have dx square minus y square, in which it follows along the x-axis and the y-axis, the lobe. Okay. So this is how orbitals are there in reality. This can be 2px or this can be 3py. That's all. Okay, so this is the basic structure of all the And sp and d orbitals. Let me tell you that these structures are most important because people usually don't understand them. And this is what comes in JEE Advanced when they ask you about the orientation, and this only helps you to understand how the atoms overlap or interact. Okay. Yeah, so this is one of the most important topic. Fine. So basically students need to remember the shape of each of the sp and d orbitals for deciding the orientation later on when they are asked in the examination. So let's move on to other. Okay, now we are going to start with the most important topic of chemical bonding, which is called as hybridization. And now I will teach you how to do hybridization of any molecule. Okay. So first of all,
this is a simple chart, and which also shows you how the molecule is, what is its geometry, what will be the bond angle of the molecule, and if there is an electron pair, then how its geometry will be, and if a lone pair is there, how it will affect the original geometry and how will it change. Right. First of all, for x equals to 2, we know the compound is going to be linear, and the hybridization is going to be sp, and the bond angle 180 degree. Okay. Similarly, for x equals to 3, we know that the hybridization is sp2. One more important point is like x equals to 2 or x equals to 3, apart from being the halides or the subordinate elements attached to the central atom, they also can signify one more very important thing. Like from x equals to 3, you can make out that 3 orbitals are involved in hybridization. Okay. Like in sp2, how many orbitals are involved? 3. 1s and 2p. Okay. This is also a good way to use x equals to 2 and all. So for x equals to 3, we know that it's sp2 by a formula which I will also discuss in one question, the first question, and explain the formula in much detail over there. Okay. And then for sp2, we know the ideal molecule should be trigonal planar. Okay. And the bond angle should be 120 degree. But now if it has one plane, one lone pair. Okay, like if it's a nitrogen atom. Like it's a nitrogen atom or something like that. If it's a lone pair, then it will be a band shape. Okay, and would it affect the bond angle as well? Yeah, it will affect the bond angle, and I have taken all sorts of problem related to that in the questions which will be discussed later. And then we know as x equals to 4, we come with sp3 hybridization, tetrahedral, and if there are lone pairs present, if one lone pair is present, then trigonal bipyramidal, and if two lone pairs are present, then band shape. The molecule will be band shape. So with an increase in the number of lone pairs, the bond angle keeps on decreasing. Yeah, the bond angle keeps on decreasing. Like it's 109.5 in this case, it will be around 106.9 in this case. Okay. And here it will be around 104.5 degree. Okay. Similarly, if we have x equals to 5, we have dsp3, or we can also say it sp3d. Okay, right. Hybridization. It should be trigonal bipyramidal. Okay. And in trigonal bipyramidal, you can say here we have two different bond angles. One is 120 degree, this one. This 3 molecules, 1, 2, 3, they make bond angle of 120 degree. Okay, similar to the trigonal planar case. Similar to trigonal planar phase. And these 2 molecules, 4 and 5, they make an angle of 180 degree with each other and 90 degree with this. 3 and 4 are 90 degree to each other. Okay. And 4 and 5 are 180 degree. Okay. So if we have one lone pair, then the structure will be a distorted one and it will be a sawhorse. Okay. If we have 2, then it will be a T-shaped one. If we have 3, then it will be a linear one. Okay. So now let us proceed with the next one. When the case x equals to 6, we get a hybridization of D2sp3 or sp3d2. We know the ideal case
in this ideal case the structure should be octahedral, and as you can see this 1 2 3 4 atoms are in one plane. Okay. They are in square planar. Right. They all have an angle of 90 degree, and this two, fifth and sixth, they are 180 degree apart from each other. Okay. And fourth and fifth are again 90 degree apart from each other, as Right. it's clearly seen in the figure. Yeah. So if we have one lone pair, then we go with square pyramidal. If we have two lone pairs, then the diagram is like this, and it's square planar. Okay. As you can see, all four are in one plane, which makes a square. Right. Then if we have three lone pair, then it's a T-shaped. As you can see, a T is formed over here. And finally, when we have all the four lone pairs, it's a linear compound like this. Okay. So that's it. So now I'm going to give you just a summary of this in a table form, and let's see this. So this is the summarized table of the hybridization, and let me explain you what is what. Here A stands for central atom, X stands for substituent, and N stands for lone pair. So as we have seen the diagram, it is one and the same only. AX2, XS2, then again SP, bond angle 180 degree, XS3, trigonal planar 120, SP2, and so on. So this is the most important table, and you should remember it. This is one of the things which you have to learn in hybridization. Okay, and one important concept is the presence of lone pair, which distorts the shape, the normal geometry of the molecule. So that also needs to be taken into consideration when doing problems. Yeah. So that's it. चलो हम फिर से देखते हैं d orbitals. सबसे पहले dxy. जैसे मैंने बताया था, this is x axis, this is y, this one is z. So dxy, आप ये देख सकते हैं कि ये वाला जो लोब है वो x और y एक्सिस के बीच में लाई कर रहा है, जैसे हमने पहले समझाया था. और आप देख सकते हो जैसे ये वाला जो प्लेन और ये जो प्लेन है वो dxy से परपेंडिकुलर है. बिल्कुल. एंड इट्स पार्ट इज पासिंग टू द सेंटर. ओके. और जैसे आप इधर देख सकते हो माइनस साइन प्लस साइन, ये एक बेसिक साइन कन्वेंशन है जिसका आपको बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में. ठीक है. जैसे इसको हमने लोब 1 कंसिडर कर दिया, ये हमारा लोब 2 हो गया, ये हमारा लोब 3 हो गया, ये हमारा लोब 1 हो गया. अब जैसे उधर माइनस साइन है, वहाँ पे प्लस साइन भी हो सकता है, क्योंकि इसी भी एक साइन कन्वेंशन है. तो हमने माइनस की जगह कर दिया प्लस 1 में, 2 में कर दिया माइनस, 3 में फिर जैसे इधर माइनस है तो इधर भी माइनस था, तो इधर हमें प्लस करना पड़ेगा, और 4th में हो गया माइनस करना होगा. उसी तरीके से आप देख सकते हैं dx z ऑर्बिटल, dy z ऑर्बिटल, और उसी तरीके से dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में आप देख सकते हैं कि जो लोब है वो x एक्सिस और y एक्सिस में लाई कर रहा है. एंड फाइनली dz स्क्वायर में हम ये जो लोब है जो अलोंग z एक्सिस लाई करता है उसे हमने प्लस चार्ज दे दिया, और जो उसको सराउंड करने वाली रिंग है उन्हें हमने माइनस चार्ज दे दिया. बट हम उल्टा भी कर सकते हैं. हाँ, ने माइनस क्योंकि बस ये एक साइन कन्वेंशन है. ठीक है. दैट्स इट. ठीक है. अब आगे हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. अभी हम सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं विच इज़ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और यही से अब के एडवांस के क्वेश्चन और जो भी आजकल नए जेई के क्वेश्चन बनेंगे वो मोस्ट प्रोबेबली इसी हिस्से से आएंगे.
ओके। अब जैसे हमने उधर कन्वेंशन देखा था माइनस एंड प्लस का, सो इधर हम ऑरेंज कलर को कोई भी चलो हम उसे माइनस ले लेते हैं, और अब देखते हैं 1s ऑर्बिटल में क्या हो रहा है। ये एक माइनस है, वो जुड़ रहा है एक और माइनस के साथ, ठीक है। तो वो बना रहा है सिग्मा 1। ठीक है, ये सिग्मा 1 बेसिकली क्या है? सिग्मा 1 बेसिकली वो ऑर्बिटल है जो दो s ऑर्बिटल के कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप से बनता है। ओके। और कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप जब होता है जब सेम साइन के एलिमेंट्स जुड़ते हैं, जैसे जब माइनस जुड़ता है माइनस से या प्लस जुड़ेगा प्लस से, ठीक है, तब कंस्ट्रक्टिव तब ओवरलैप हम उसे बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप। ओके। इसमें मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है। दिस इज व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप। ओके। और जब माइनस मिलता है प्लस से या प्लस मिलेगा माइनस से, उसे हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप। और जैसे हमें पता है कि कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप जब भी होता है तब सिग्मा या पाई या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। ठीक है, ये एक नाम देते हैं हमने। और जब भी डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप बनता है तब सिग्मा स्टार, पाई स्टार जैसे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। ओके। अब इसी केस में देख लीजिए, जैसे हमने ऑरेंज को माइनस कंसिडर किया तो ब्लू को हम प्लस कंसिडर करेंगे। अब इसमें 1 माइनस एक प्लस के साथ जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप जी। और यहाँ पर बन रहा है सिग्मा स्टार 1। ठीक है। सिग्मा स्टार स्टार क्या डिफाइन करता है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इधर आप देख सकते हैं कि जो एरिया है उसका एरिया कम हो गया है, बिल्कुल। यानी इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना कम हो गई है। इसलिए जो इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी थी वो एंटी बॉन्डिंग में कम होती है एज कम्पेयर टू बॉन्डिंग। मतलब ओवरलैप वगैरह जब भी होगा ये तो ये वाला बेटर होगा। ओके। सो इसलिए ये भी एक रीज़न है कि ये लोअर एनर्जी रहता है। ठीक है। अब उसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2px और 2py मिल रहे हैं, या वी कैन से इस केस में जैसे लेट अस कंसीडर दिस इज 2py, सो दिस इज ऑल्सो 2py, दे बोथ आर 2py। ओके। अब हमने जैसे ऑरेंज माइनस दिया माइनस माइनस और ब्लू ले लिया हमने प्लस प्लस, सो यहाँ पर क्या हो रहा है कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप और बन रहा है पाई। पाई क्यों बन रहा है? क्योंकि यहाँ पर हो रहा है साइड ओवरलैप, और हमें पता है पाई बॉन्ड जब बनता है जब होता है साइड ओवरलैप। और सिग्मा बॉन्ड कब बनता है? जब होता है डायरेक्ट ओवरलैप। ओके। उसी तरीके से यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप बन रहा है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट हो रहा है 2pz में। ठीक है। सो सिग्मा 2 बना। ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप हुआ है, इसलिए पाई स्टार बना एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग जी। और उसी तरीके से यहाँ पे फिर से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। ओके। सो दिस इज व्हाट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज। और इसी से आपके मेन ओरिएंटेशन वाले क्वेश्चंस और क्वेश्चन जो टफ लेवल पे जाएंगे वो इसी कंसेप्ट से जाएंगे, क्योंकि बेसिकली लोगों को ये समझ में नहीं आता कि बॉन्ड बनते कैसे। सो दिस इज व्हाट द बेसिक कंसेप्ट इज। सो ये आपको आना चाहिए। तो पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में से किसकी एनर्जी ज़्यादा होती है? पाई बॉन्ड की, क्योंकि पाई बॉन्ड में उतनी इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होती है, वो साइड ओवरलैप होता है। ठीक है, डायरेक्ट में इफेक्टिव ओवरलैप है तो और हमें पता है कि जिसकी ज़्यादा इफेक्टिव ओवरलैप होंगी
उसकी एनर्जी उतनी ही कम होंगी। ओके। और कोई भी मॉलिक्यूल ट्राई करता है कि उसकी एनर्जी मिनिमम रहे। तो ये है मेन कंसेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और इसी से आपके जेई मेंस और जेई एडवांस के हाई लेवल वाले क्वेश्चन आएंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे वन ऑफ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग विच इज फजान रूल, एंड लेट अस प्रोसीड। फर्स्ट ऑफ ऑल, the simple points, as you might also have learned, that polarization is directly proportional to covalent character. Okay. Means more the polarization of a molecule, the more the molecule covalent will be. Okay. Now the second, more the charges, more will be the polarization. Like in the scales Al3 plus, Al2 plus, Al plus. So a molecule like, if it form AlCl3 or AlCl2 and AlCl, then this will be the most covalent one. Okay, because of higher charge of A atom. And then the third one, cation size is inversely proportional to polarization. Right. Means more the size of cation, the weaker the polarization will be, And weaker, lesser would be the covalent bond. Like lithium Li plus, sodium, potassium, they go down the group. Right. So we know K plus is the highest size, Right. and hence its polarization will be least. Okay. So the compound of lithium like LiCl, it will be having the highest covalent character. Correct. And in the case of anion, the thing is reverse. It's directly proportional to polarization. Okay. Like if we see the case of fluorine, chlorine, bromine, the halogen group, Right. we know the size increases down the group. Okay. So bromine has the highest size, Right. and hence it will polarize the most. Okay, so bromine compounds will have the maximum Yeah. covalent So character. if we compare LiBr, LiF, LiCl, then LiBr should be the most covalent. Okay. Now we proceed with dipole moment. So we know the dipole moment is nu equals to q cross d. Like two charges are there, plus and minus, and d is the distance between them, and nu is our dipole moment. Q is nothing but the magnitude of charge of any atom, and then d is distance between the two atoms. Okay. That's it. And then we go with, So it's basically a vector quantity. Yeah. It has a direction. So dipole moment, like in this here you can see in CO2, as we know the dipole moment always go from a positive to more negative. Okay. So the arrow is like this, but as we know the CO2 is linear and it's symmetrical also. So the dipole moment on the both side cancels, and the resultant dipole moment is zero Okay. in this molecule. Okay, so all linear molecules generally have round about zero dipole moment. It depends Okay. upon the substituents. Okay, What kind of okay. substituents are there? Fine. Now, when we go for one diopter is nothing but 3.83 10 to the power minus 30 centimeter, or 10 to the power minus 18 ESU centimeter. This is nothing but dipole units. Okay, the SI unit of dipole Yeah, moment. SI unit is diopter. Now, percentage ionic character. We know percentage ionic character is nothing but observed dipole moment, what we are going to observe in the Okay. experiment, upon the calculated dipole moment assuming 100% ionic bond. If you assume the bond to be 100% ionic, Right. multiplied by 100, that is what will give you PIC, which is percentage ionic character. Now, in the polyatomic unsymmetrical molecules,
when the central atom is same but the side atom is different, then with increase in size, the size atom bond angle increases. Let us see what is it. Here you can say the central atom is same, which is phosphorus, and the size atom is changing. Okay. Iodine, bromine and chlorine. And I have even mentioned the bond angle with them. And you can see iodine has the maximum bond angle, that's 102, then bromine, then chlorine. So what is the reason of this? As size of I is greater than size of Br, therefore we know that iodine has greater size than Br, and hence there will be more steric repulsion between the two iodine groups than the Br group. Okay. And hence they will spread more, and hence the bond angle will be greater, that is in this case 102 and in this case 100. Now last thing, in the polyatomic unsymmetrical molecules, when the central atom is different but side atom is same, then with increase in size of central atom, bond angle decreases. Like you can see in this case, NH3, PH3, ASH3, the side atom is same, that is the hydrogen, but the central atom differs. First is nitrogen, phosphorus and Arsenic. astatine, and the bond angle over here is 107, here is 93 and here is 92, and it will follow so on. Okay. And one more important point to note is that solids like PX5 or let us take a specific example, PCl5, they exist in solid state as PCl6 plus PCl4 minus. Okay. And compounds like P2H6, they have banana bonds, and you will learn about them in more detail in the inorganic chapters. That's it.